Let's discuss equation of a parabola. What basically parabola is, when you drop an object from a given height, path it follows, you call it straight line. But when you throw an object at some angle from the horizontal, let's say this angle is theta, and you project something with some initial velocity u, then its path is like this. This type of path is called parabola, and we study this thing in projectile motion. But as of now, we are interested in how to write equation of a parabola. So, basic fundamental part is what? When you drop something. When you drop something, it follows what? A straight line path. When you throw something at some angle, like this, then this type of path is a parabola. जो डिटेल्स हैं किस कंडीशन में पैराबोला बनता है, किस कंडीशन में स्ट्रेट लाइन, we'll see these things in projectile motion itself. But right now, look here. This is the axis system, x and y. X-axis, y-axis. If you draw a graph like this blue shape, then its equation is given by y square equals to 4ax. हम फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डीपली इंटरेस्टेड नहीं हैं कि हाउ डू यू अराइव एट दिस इक्वेशन. इफ समबडी नीड्स दैट इंफॉर्मेशन, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. हमारा एम इस इक्वेशन के फॉर्मेट को समझना है. व्हाट डज इट मीन, दिस पावर 2 एंड ऑल, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ a and all. This is something which we are interested in. This blue curve which you see is a parabola. If you have any point x comma y on this curve, then its equation is given by y square equals to 4ax. In this setup, your a is positive. And what basically a is, right here we have a point which is called focus, and this focus is at a distance of a from origin. That's your origin. If this distance is a, then at this point you will write coordinates like a comma 0. That's the focus. What is focus? A rough idea. आपने इस तरह के spherical mirrors को देखा हुआ है, and you have been taught that when light falls on a spherical mirror like this, which is a concave mirror, then after reflection it meets at this point, and this point is called what? Focus. Now, in case of a spherical mirror, if you take all the parallel rays, they never meet
at a single point. But if you take a parabolic shape, then all the rays which are parallel and hitting the parabolic surface like this, they always meet at a single point, and that single point is called what? Focus. Right here. हमारे लिए when you consider y square equals to 4ax, and when I say that you are throwing an object and its path is parabolic, you don't have to worry about this focus and all. For you, a is just a number which, if is positive, this thing will open like this. अभी थोड़ी देर में और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी. Now, if you look at this y square equals to 4ax, notice this part that power of x is 1. And when we were discussing equation of a straight line, we had it like y equals to mx plus c. Power of x is 1, power of y is 1. What is the meaning of these powers? Power 1 and power 1, power 1 and power 2. That's what makes a difference between a straight line and a parabola. यहाँ पर when we drew a line like this, that was a straight line. If you take any point x, comma y, what is happening? This distance is x and this height is what? Y. For a given value of x, there is a given value of y. For a given value of x, there is a given value of y. And therefore you are having power 1, power 1. यहाँ देखना समझ में आएगी चीज. जब आप इस पोजीशन पर हैं, then for a given value of x, you cannot say that you are getting a given value of y. कैसे? जब आप इस जगह पर हैं या फिर इस जगह पर हैं, right here or at this point. At this point also, your x coordinate will be x. But if y coordinate is at this point is positive, then you know that your y coordinate at this point will be negative. So what is happening? For a given value of x, you're getting two values of y. One is positive and the other one is negative. For a given value of x, you're getting two values of y. That's what these powers mean in an equation like this. थोड़ी देर में ये पार्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम यहां पर इन इक्वेशंस के फॉर्म में क्या चीज देखना चाहते हैं. इस चीज को let's discuss the whole thing in this form. Suppose we draw this parabola not towards x-axis, but let's say towards minus x-axis. Then it will be easier for us to understand what is the difference between taking value of a positive or taking value of a negative. Look here. Wait a second. I'll have to cut it here. This is the axis system.
let's say we draw a parabola like this, and equation of the parabola is y square equals to 4ax, and say a is 1. Then this equation becomes y square equals to 4x. Now, if you take x equals to plus 1, then y square is coming 4. X is 1, y square is coming what? 4. Y square equals to 4 gives us y as plus 2 and y as minus 2. If y square is 4, you know that y is plus 2 and y is what? Minus 2. So that's what the meaning is of this term. And I say for a given value of x, x is 1. You're getting two values of y, plus 2 and minus 2. At this point, this distance is 1. And therefore, if you reach this position or if you reach this position, at both positions your x coordinate will be 1. You're on the right side, x is 1, x is 1. But for this position, this height is coming 2. And therefore y coordinate is 2. Whereas for this point, your y coordinate is what? Minus 2. And therefore, for a given value of x, you're getting two values of y. Whereas when you deal with an equation of a straight line, for a given value of x, you always get a single value of y. And therefore, equation of a straight line is always in this form, y equals to mx plus c, whereas the equation of a parabola is in this form, which is y square equals to 4ax. अब इसी ग्राफ के अंदर अगर मैं इस पैराबोला को इस तरह से प्लॉट करता, it opens up towards minus x-axis. For this type of parabola, we say that equation is y square equals to minus of 4ax. Y square equals to minus of 4ax. यहां क्या हो रहा है? क्या मीनिंग है नेगेटिव साइन का? सपोज आपने a अभी भी प्लस 1 लिया. If a is plus 1, this equation gives you y square equals to minus of 4x. Now, somebody at this position, this distance is 1. I said distance. But at this point, if you reach this position or you reach this position, your x coordinate will be minus 1. Your x coordinate will be minus 1. Minus 1 and minus 1. Distance wise, this thing is what? 1. Same as this. From this point to this point, height wise, it's what? 2.
it's below x-axis, and therefore we are taking y coordinate as -2. This distance is 1. X coordinate is -1 because we are on the left side of origin. Now once I put x equals to -1 in this equation, you get what? X is -1, minus minus plus, that gives you what? Y square equals to 4, which again gives us y plus 2 and y minus of 2. So you're getting plus 2 and you're also getting minus 2. When parabola opens up towards minus x-axis, we use this negative sign just to make the whole right hand side positive. And why? It should be positive because left hand side is a square and squares are always positive. If left side is positive, then right side should also be what? Positive. And therefore on this side x is negative. Negative of negative will make everything what? Positive. तो अगर ग्राफ आपका पैराबोलिक x एक्सिस की तरफ ओपन होगा प्लस x, इट्स इक्वेशन विल बी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. अगर ग्राफ हमारा माइनस x एक्सिस की तरफ ओपन होगा, इक्वेशन विल बी माइनस ऑफ 4ax. दोनों ही सिचुएशन में फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x यू गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ y. इसी चीज को अब हम पैराबोला के थर्ड फॉर्मेट एंड फोर्थ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देखते हैं. यहां तक का पार्ट नोट करिए. Now suppose you draw your parabola like this. It opens up towards plus y-axis. Equation of such a parabola, if you write it as y square equals to 4ax, will not be correct. क्यों नहीं होगी? What does it say? For a given value of x, you get two values of y. जरा यहां देखते हैं हमें क्या मिलती है कहानी. अगर आप if you draw a horizontal line like this, इस horizontal line का मतलब है कि आप अगर यहां पर हैं at this point or you are at this point, at both these points your y coordinate is what? Same. Height. This is y, this is y. But on the left side, your x coordinate will be negative, y coordinate will be positive. On the right side, your x coordinate is positive and y coordinate is also positive. Which means for a given value of y, you're getting two values of x. अभी numerical value से भी समझेंगे इस चीज को. For a given value of y, you're getting two values of x. Y, it only has one value. But x, it gets two values. And how do you take this point in consideration? Look here. If you write equation of this parabola in this form, x square equals to 4ay, then what does it tell us? For one value of y, you will get two values of x. So when a parabola opens like this towards positive y-axis,
its equation is given by x square equals to 4ay. अगर यही पैराबोला हमारा if it opens like this, downward opening parabola, अगर ये माइनस वाई एक्सिस की तरफ ओपन होगा, then equation of this parabola is given by x square equals to minus of 4ay. अगर ये कहाँ ओपन होगा, downwards like this, then equation is given by x square equals to minus 4ay. प्रोजेक्टाइल मोशन में हम इस तरह के पैराबोला के साथ डील कर रहे होंगे, because you can see if you throw an object at some angle, it follows this path. तो जो अपना प्रोजेक्टाइल मोशन में पैराबोला फॉर्म होगा, वहां पर आप नोटिस करेंगे y इसका पावर हुआ करेगा 1 और x इसका पावर हुआ करेगा 2. अभी x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इन दोनों चीजों को न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ समझते हैं. हमने इस अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला को इस तरह से डिफाइन किया, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay से a is 2. If a is 2, then this thing becomes 8y. Now this is 8y, and let's say y is 2. 2 इसलिए लिया है, इस तरीके स्क्वायर रूट इजीली निकला है अपना. If y is 2, you can see that your x square becomes what? 16. Y is 2, 8, 2. This x square equals 16 gives us x equals to plus 8 and x equals to minus 8. For a given value of y, which is 2, we're getting two values of x which are 8 and minus 8. यहां पर जब मैं इस जगह पर हूं, तब भी ये हाइट है 2. When I'm at this point, again, height is what? 2. जब आप इस पोजीशन पर हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 8. जब आप इस पोजीशन पर हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, I said distance is what? 8. And therefore, if I ask you to write coordinates of this point, you will say 2. Sorry, x coordinate first. You will write x coordinate is 8. And y coordinate is 2. At this point, your x coordinate will be minus 8 and your y coordinate is what? 2. For a given value of y, you're getting two values of x. That's what it means when you say x square equals to 4ay. If it opens like this, और सपोज आपने डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला को, सपोज आपने इस डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला में इस तरह से यूज किया होता, दैट x स्क्वायर इज 4ay. लेट्स से you take equation of downward opening parabola in this form. Now if a is 2, just like this, and y is also 2, a is 2 and y is 2, then y equals to 2 means you're talking about this region above the horizontal axis, above the x-axis, and if you are above the x-axis, your y coordinate cannot be plus 2, and therefore you must take y as what? Minus 2. Once you take y as minus 2, ये equation बनेगा x square equals to minus of a 2 y minus 2. This gives you minus of what? 16.
square is coming negative, something which is not possible. And therefore, when a parabola opens downwards, you cannot write its equation in this form, x square equals to 4ay. This thing is not correct. But now let's talk about this, x square equals to minus 4ay. For the same value set, हमने x square equals to minus 4ay में y, let's take it minus 2, a plus 2. Your x square becomes minus of minus plus 16, which gives you two values of x. One is 4 and the other value is what? Minus 4. हमने यहाँ पर एक छोटा सा सिली मिस्टेक कर दिया है. होपफुली हर आदमी ने इस चीज को नोटिस किया होगा. 16 I've taken the square root as what? 8. I hope आपको पता होगा कि सर को स्क्वायर रूट लेना बनता ही होगा. This is silly mistake. Plus 4 and minus 4. Just modify these values. 4 and minus 4. Now, if it opens like this, equation is what? X square equals to minus 4ay. दिमाग में क्या रखना है अब आपको? नेगेटिव साइन क्यों यूज कर रहे हैं आप? डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला या y is negative. Negative of negative will give you what? A positive number. Therefore, we say that x square equals to minus 4ay. Now, wrote down this much, and then we'll see use of these parabolic equations in physics. Wrote down this. Now let's see a few examples of parabola in physics. Everybody has seen this equation, S equals to ut plus half at square. अभी चीजों को थोड़ा इजी लेवल पर लेकर चलते हैं. Let's say initial velocity is 0, u. Then this equation becomes S equals to half at square. And remember that a is acceleration, s is displacement, and t is time. If I ask you to plot a graph of displacement and time, displacement versus time, then first thing which you notice is power of s is 1 and that of t is what? 2. And therefore, when you plot a graph, shape of that graph will be what? Parabolic. अब किस तरह का पैराबोला? हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट है पैराबोलास को ड्रॉ करने के. हम इस तरह से भी ड्रॉ करते हैं, हम इस तरह से भी ड्रॉ करते हैं, हम इस तरह से भी ड्रॉ करते हैं, हम इस तरह से भी ड्रॉ करते हैं. Now, which one is the correct format in this situation? And we are also considering that acceleration, which is a, is positive. Now, इस स्टेज पर आप वीडियो को पॉज करेंगे एंड पॉज करने के बाद ड्रॉ दिस ग्राफ एंड देन कम बैक and verify the whole thing. S equals to half at square
हमने इस फॉर्मेट को इस तरह से अरेंज किया, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2s अपॉन ए, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2s अपॉन ए। हालांकि बाद में अपने एक लाइन में इस चीज को खत्म करेंगे, लेकिन अभी जिस तरह से हमने कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है उसके लिए हमने सिस्टम इस तरह से ड्रॉ किया। नाउ सपोज t is equivalent to x-axis and s is equivalent to y-axis। तो फिर ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट इस तरह का है, x स्क्वायर t 2 upon a multiplied by s which is y। इस पूरी कहानी को हमने x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay इसके साथ कंपेयर किया। नाउ इस a और जो पैराबोला में a आया था, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैंने अभी यहां पर कैपिटल A यूज किया हुआ है। कैपिटल A क्या शो करता था पता है आपको? डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ओरिजिन। अभी तक के हमने एग्जांपल्स में उसे स्मॉल a से शो किया था, लेकिन यहां स्मॉल a क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन। एंड जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू a's आई एम यूजिंग कैपिटल A। When you compare these two equations, you know an equation of this type, x square equals to 4ay. How do you open it? You open this equation in this form. That's how you open it. X square equals to 4ay. If this whole thing, you can easily remember like this, if coefficient of y, the whole thing, this whole thing, if coefficient of y is positive, coefficient of y is what? 2 upon a. Question says that acceleration is positive. So if this thing is positive, this is positive, then your graph opens like this. X square equals to 4ay. For a given value of y, you get two values of x. That's the graph. आगे से एक छोटी सी ट्रिक है, उसको हम यूज किया करेंगे। अगर t स्क्वायर है तो ग्राफ ओपन होगा s की तरफ। फिर से अगर स्क्वायर x का है तो ग्राफ ओपन होगा y की तरफ। दिस इक्वेशन, it was what? y square equals to 4ax। अगर y का स्क्वायर है तो ग्राफ कहां ओपन होगा? x की तरफ। दिस वाज x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अगर स्क्वायर x का है तो ग्राफ कहां ओपन होगा? y की तरफ, लाइक दिस। एंड देन अगर कोएफिशिएंट्स नेगेटिव है तो आपको पता है क्या आपको एडजस्टमेंट करने होते हैं। क्या लॉजिक है वो समझ चुके हैं अपन। नाउ जैसे अपने से ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला गया दैट ड्रॉ ग्राफ ऑफ s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट? 0। हमने क्या किया? u0 s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर। एक तो तरीका है कि आप इस पूरी चीज को x एंड y के साथ रिलेट करें और जो हमने सीखा हुआ है। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या समझाया? इसका स्क्वायर है t, तो ग्राफ कहां ओपन होगा? डिस्प्लेसमेंट की तरफ। But you need to make sure that your a, this whole coefficient, this thing is what? Positive, ऊपर। अगर ये coefficient आपका क्या हो जाता? Negative, downwards। Now, back to this question। अभी हमारी कहानी यहां पर कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों कंप्लीट नहीं हुई है? क्योंकि हमारे लिए ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में है। It's not between y and x. X is something which can be positive, can also be negative. We are dealing with what? Time. Time cannot be negative. As time cannot be negative, we have to remove this portion.
Once you remove this portion, this is the graph starting from origin, giving us s equals to half a t square. Hopefully समझ में आया होगा. Note down this. Let's take another example. V square we know is u square plus 2as. And again, let's say initial velocity is 0. Then this equation becomes v square equals to 2as. हमसे बोला गया है कि हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है between velocity and displacement. Acceleration A we have been given, that is positive. Now again, pause the video, draw the graph, come back and find out if things are correct or not. हमने किस तरह से चीजों को संभालना है? शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड. डिस्प्लेसमेंट का पावर 1 है, v वेलोसिटी इसका पावर 2 है. तो अगर v का पावर 2 है तो ग्राफ कहां ओपन होगा? डिस्प्लेसमेंट की तरफ. अगर v का पावर 2 है तो ग्राफ कहां ओपन होगा? डिस्प्लेसमेंट की तरफ, लाइक दिस. नाउ क्या ये पूरा का पूरा ग्राफ हमारे काम का है? उस चीज को देखने के लिए, इनफैक्ट बिफोर दैट, कुछ लोगों को ये चीज एक बार में अगर क्लियर नहीं हुई हो तो अगेन v ये किसकी तरह से डील कर रहा है? y, s इज x. तो जो हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या बन चुकी है? y square equals to 2ax. And let's compare this equation with y square equals to 4ax. पता है आपको what is small a, what is capital A? Small a is what? Acceleration, and capital A जो हमने पैराबोला के साथ सीखा हुआ है. If a is positive, तो जो x का कोएफिशिएंट है, that coefficient is what? Positive. और अगर ये 4a पार्ट हमारा पॉजिटिव आता था तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर आपसे y square equals to 4ax इस तरह का ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला गया था, तो हमने इस तरह से ग्राफ को प्लॉट किया था. केवल एक छोटा सा हमने चेंज क्या कर दिया है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम स्मॉल a को क्या डिफाइन कर रहे हैं? कैपिटल A. यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, दैट वाज कैपिटल A. इस जगह के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे a, 0. दिस पॉइंट इज फोकस. हमें इस फोकस से कोई मतलब नहीं है इस इक्वेशन की जब बात करेंगे आप. देयर इज नो नथिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ रिगार्डिंग दिस फोकस थिंग. हमारे लिए केवल क्या थीम है? स्क्वायर किसका है? y. तो ग्राफ कहां ओपन होगा? x की तरफ, या तो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड कब ओपन होगा? जब x का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा. अपनी इक्वेशन में हम आए, x का कोएफिशिएंट 4a, x का कोएफिशिएंट 2a इज व्हाट? पॉजिटिव. इसलिए ग्राफ कहां ओपन होगा? राइट साइड. ट्रिक क्या सिखाया मैंने आपको? अगर स्क्वायर v का है तो ग्राफ कहां ओपन होगा? s की तरफ. अगर स्क्वायर v का है तो ग्राफ कहां ओपन होगा? s की तरफ.
अगर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड, अगर कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड। इतनी सी ट्रिक है, होपफुली समझ में आती होगी ना। अब अपने को ये सोचना है कि क्या ये पूरा का पूरा ग्राफ हमारे काम का है, या फिर अपर पोर्शन काम का है, या फिर लोअर पोर्शन। उसके लिए हमने क्या किया, look here, let's discuss path of this object for the time being. This is graph and now I'm talking about path. एक ऑब्जेक्ट है, ये ओरिजिन है, and it's been given that object can travel along x axis. स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट x इक्वल्स टू 0 पर है। अब ये पाथ ड्रॉ कर रहे हैं अपन लोग, यहां पर ध्यान रखना x ओरिजिन की पोजीशन है, ऑब्जेक्ट या तो राइट साइड जा रहा है या फिर लेफ्ट साइड जा रहा है। अपने को इंफॉर्मेशन दे रखा है दैट स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन यहां पर हमारा पॉजिटिव है। अपने को पता है पॉजिटिव का मतलब होता है ईस्ट और नेगेटिव का मतलब होता है वेस्ट। तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट राइट साइड मूव करेगा, तो ऑब्जेक्ट राइट साइड मूव करेगा, तो दैट मींस जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट इज आल्सो टुवर्ड्स राइट साइड ईस्ट, एंड देयरफॉर योर एस इज व्हाट, पॉजिटिव। ये दिख रहा है आपको, एस पॉजिटिव है, इस तरफ नहीं है आप। बट देन नोटिस वन थिंग, अगर आप इस ग्राफ में इस पोजीशन पर आते तो आपका एस पॉजिटिव निकलता और जो वेलोसिटी पार्ट है वो नेगेटिव आता अंडर दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस v, it will be what, negative। लेकिन ऑब्जेक्ट थ्रू आउट कहां मूव कर रहा है, ईस्ट। क्यों? बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब जो भी वेलोसिटी होनी चाहिए दैट मस्ट बी व्हाट, पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो हमने बोला दिस पोर्शन ऑफ ग्राफ इज नॉट अलाउड, हमारा ग्राफ केवल यहां से यहां तक का है। अभी आप इस पोर्शन को ड्रॉ करेंगे एंड यू विल शो दिस रीजन, जिससे कि आपको समझ में आ सके दैट वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन दिस पार्ट। So this upper portion is the correct version. इसी चीज में अगर सेम इंफॉर्मेशन दे रखी होती है अपने को, लेकिन दिया होता दैट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तब आप क्या कर रहे होते, चीजों को यहां पर देखना। v square is u square plus 2as, u is 0, u 0 है, लेकिन इस बार अपने को दिया हुआ है दैट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। होपफुली आपने पिछला पार्ट नोट कर लिया होगा, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो फिर ये जो कोएफिशिएंट है, दिस कोएफिशिएंट इज नेगेटिव, और अगर ये कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो हमारा ग्राफ इस तरह से ओपन होगा। वर्टिकल एक्सिस इज v, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज s। अब स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, 0। एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, नेगेटिव। अपने को पता करना है कि इस ग्राफ का अपर पोर्शन या लोअर पोर्शन, कौन सा पोर्शन हमारे काम का है। हमने ड्रॉ किया पाथ, अगेन दिस इज पाथ, एक्स ओरिजिन। आप ओरिजिन पर हैं और एक्सेलरेशन है नेगेटिव। नेगेटिव मींस व्हाट, वेस्ट। तो अगर आप ओरिजिन पर हैं और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब आप कहां मूव कर रहे होंगे, लेफ्ट साइड। अगर कोई आदमी लेफ्ट साइड जाएगा तो उसकी वेलोसिटी भी लेफ्ट होगी, विच इज व्हाट, नेगेटिव। Look at this graph. This upper portion says your velocity is what, positive, and therefore we say that we'll remove this portion. तो हमारे काम का ग्राफ कौन सा है, this part. होपफुली समझ में आ गया होगा किस तरह से
पैराबोलिक इक्वेशंस को आप यूज कर सकते हैं। बाकी इस तरह के जो भी एग्जांपल्स आएंगे जब जब अपना लेक्चर चलेगा उसके साथ साथ उन चीजों को देखा करेंगे। एक डिसेंट आइडिया आपको पैराबोला का इस पूरी एक्सरसाइज के थ्रू लग गया होगा। थैंक यू वेरी मच।